Hello friends, good morning. Myself Akhil this side. Today I'm ready with the list of important questions which can come for industrial law and intellectual property for 2019. And friends, at the outset of this video I would like to say that this is totally based on my research and analysis work done on the previous year question paper, as well as few topics I have covered from book which might come. So first question in unit 1. The meaning and the context of intellectual property, and also describe background and development and nature of industrial property. So friend, this is the regular question, but what is new? Background and development. Background and development you need to prepare from the book, and for this paper Bright is also good. For this paper Bright is also good because book is having approximately 160 pages and Bright is having approximately 110 pages, and the quality of question answer is also very good. Answer are given in 5 pages, 6 pages, and completing maximum thing, but the development is not given there. You have to prepare from the book only. And now in previous questions we have seen that at least one question they are asking which was not given in previous year question paper, so it can come as a bouncer. So please read about the development. And second, what is WIPO, World Intellectual Property Organization, and how it is shaping intellectual right. Also define function of WIPO, membership of WIPO, and organs of WIPO. It is again given in book, and in 2018 it was these two questions were not asked, and Berne Convention was asked, and one was topic was also asked which is not relevant for 2019. Though you can prepare, but go for the these question first. And बाकी कुछ भी तैयार करना है आप तैयार करो, लेकिन ये 2019 का जो गैस क्वेश्चन पेपर है ये पहले तैयार कर लो. उसके बाद जो भी तैयार करना हो, आपके अंदर बहुत इच्छा है नॉलेज की, तो यू कैन प्रिपेयर. एंड व्हाट इज अनदर बाउंसर कैन कम, व्हाट इज ट्रिप agreement and what are the objective of the trip agreements. This is also given in book, not in a Bright, and not too much lengthy also, so you can prepare easily from book. Fourth question in unit 1 which can come as per my suggestion is, what is the WTO, World Trade Organization? Define the agreement between the WIPO and WTO. What are the rules and regulation of WTO and how settlement of dispute is done? So WTO is very important, as we know that it is a World Trade Organization, and those nations who have signed treaty with this WTO, they have to follow the norms and which is applicable universally to every nation. And this is very helpful. This pact is very helpful for the business purposes, and also maintaining the sanctity of IPR rights between the trading nations. So this might come, and it for the sake of knowledge also, अगर हम ये WTO पढ़ते हैं तो उसको डेवलपमेंट में भी लिख सकते हैं, और WTO भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको बुक से आप पढ़ सकते हो. लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 में एज पर माई गेस वर्क इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क. Discuss the details of the condition and procedure of trademark. Trademark is subject to registration and restoration and removal, and subject of its opposition. In which condition we can oppose trademark? तो ये भी हम पढ़ सकते हैं. ट्रेडमार्क का ये पूछता है. What is important? हम ये ट्रिप को पढ़ लें, और WTO के फंक्शंस को, मेंबरशिप को, ये भी हम पढ़ सकते हैं और आ भी सकता है. As per 2018 analysis of question paper, these question were not asked, तो अभी इसको हम पढ़ सकते हैं. सेकेंड यूनिट में what is copyright and what changes has introduced in it with the latest amendment, and what are the remedies available. तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बुक में अपडेट नहीं है तो एक बार नेट में थोड़ा बहुत देख लें, उससे नेट से भी हम रेफ़र कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की बुक अपडेटेड नहीं है. दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट दी मनी टू रिट्रीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द अपडेशन ऑफ द मॉड्यूल्स. नाउ डेज मैनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम, and the content of publishing content is also pathetic. So this is the reason I have started making video, because I knew that they are not helping with, we don't get proper help, nobody is there to receive call. So this is the reason, because of dissatisfaction I have started this video work, so that I can help my fellow colleagues. And another question in unit 2 is copyright exists in expression of idea, not in idea. देखो कितना सेंटेंस सिंपल है, और कभी कभी ये भी बना के पूछ लेता है कि मैं अपने कॉपीराइट जो मेरे दिमाग में जो आइडिया आते हैं वो
अगर मैं उनको काम करता हूँ, उनको जो बनाता हूँ, अब उनको बनाकर सामने एक मटेरियलिस्टिक वर्ड में लाता हूँ, उस पर मैं कॉपीराइट कर सकता हूँ। लेकिन जो मैं मेरे आइडिया है, जो मेरे विचार हैं, उसको आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। यू नीड टू एक्सप्लेन बाय केस लॉ ऑल्सो। एक्सप्लेन सर्टेन एक्सेप्शन वेयर द ऑथर इज नॉट द फर्स्ट ऑनर। अब यहाँ ये भी कभी पूछ लेता है कि इन विच सर्कमस्टांसेज अ पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड एंड हु हैज़ मेड समथिंग न्यू इज नॉट ट्रीटेड एज अ फर्स्ट ओनर। इसको भी आपको देखना होगा। उसके बाद यूनिट 2 में लास्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपर राइट ऑफ राइट्स इन पर्सोनम एंड इनम, वायलेशन कैन बी redress under the provision of the Copyright Act 1957, explain it। तो ये पर्सोनम और इनम ये आप देख लेना, और इसमें क्या आप इसको कैसे रिड्रेस करते हो ये भी देखना होगा। थर्ड यूनिट अब में आ जाते हैं, एक्सप्लेन राइट एंड लिमिटेशन ग्रांटेड टू पेटेंटी अंडर द पेटेंट एक्ट। उसके राइट्स क्या हैं और राइट्स में क्या लिमिटेशन है पेटेंटी के लिए, वो आपको पेटेंट एक्ट में देखना पड़ेगा। इसके बाद अनदर क्वेश्चन इन यूनिट 8 इज व्हाट इज अ पेटेंट एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पेटेंट प्रोटेक्शन, एट व्हाट स्टेज पेटेंट प्रोटेक्शन शुड बी कंसीडर्ड एंड हाउ पेटेंट सीक्स फॉर द इन्वेंशन। तो आपको किस स्टेज में पेटेंट करना चाहिए, पेटेंट एक्ट क्या है और स्कोप क्या है इसमें, कब हम उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इसमें क्या हमें करना है, डूज एंड डोंट हैं, व्हाट वी नीड टू टेक केयर, ये भी हमें देखना है। और लास्ट क्वेश्चन इन यूनिट 3 इज व्हाट अमाउंट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। क्या हमें इन्फ्रिंजमेंट, कब हमें ऐसा लगता है कि हमने पेटेंट वायलेट कर दिया है। डिस्कस द रेमेडीज ग्रांटेड अंडर द पेटेंट एक्ट। सब कुछ पेटेंट ही पेटेंट भरा पड़ा है, लास्ट टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे। और तो फर्स्ट गो फॉर दीज क्वेश्चंस इन यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इज व्हाट इज द पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, व्हाट आर द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर इफ सच पायरेसी टेक प्लेस। तो इसमें पायरेसी के प्रोविज़न को भी डिस्क्राइब करना है। पिछली बार इन्होंने पूछा नहीं था, कई बार से आया भी नहीं है, तो इसमें हमें वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। Unit 4 is mainly for the Design Act and the geographical indication. And in case you feel that your book is not updated one, then do prepare it from the Bright. Bright में भी अच्छा दे रखा है, ये बुक Bright से भी हम तैयार कर सकते हैं। But friend, one of my humble request to you all, don't prepare insurance book from Bright, because insurance is having 40 pages and Bright is not sufficient, and insurance book is really very bulky. So this is my warning that you need to, if you are studying insurance from Bright, then you will be responsible for any mishappening in examination hall. So second last question is unit 4 is Design Act 2002 provides a regulation system to protect new and original design. ठीक है, डिज़ाइन एक्ट से न्यू ओरिजिनल डिज़ाइन प्रोटेक्ट होते हैं। सो क्रिएटेड टू बी अप्लाइड और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर आर्टिकल टू बी मैन्युफैक्चर बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस कमेंट। तो इसमें हमें देना होगा कि हम डिज़ाइन एक्ट से कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग आइटम को हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपने आर्टिकल को प्रोटेक्ट करते हैं, इस पर कमेंट करना है, कोई केस लॉ नहीं देना है। What are the geographical indication and how they are protected? This is the last one. And are there any exception in the international negotiation under the ट्रिप्स एग्रीमेंट? ये भी इन्होंने 2017 में पूछा था, अभी तक नहीं आया जोग्राफिकल इंडिकेशन में। एंड हाउ इट इज़ रेलिवेंट इन केस ऑफ ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का एक TRIPS ये फर्स्ट यूनिट में भी रेलिवेंट था और यहाँ भी आ रहा है। तो ट्रिप्स तो आप तैयारी कर लो, और आजकल ये बाउंसर भी दे रहे हैं सारा, पहले जैसा नहीं दे रहे थे। अगर 2016-17 में वी वुड हैव अपीयर्ड तो वी कुड हैव गॉटन द रिपीटेड पेपर। अब यहाँ पे इन्होंने बाउंसर देने भी शुरू कर दिए हैं, तो आप ये सब देख लो। Once again, thank you so much for watching my video, and I will be uploading few more topics on the IPR, so stay tuned and best of luck for your upcoming examination. Bye bye, take care, Akhil this side.